Before we describe the sampling, we first define the term population. The word population in statistics is defined as the aggregate of objects or the totality of observations. Population does not mean only living things. For example, we have population of birth, weights, heights, price of wheat, toss of a coin, etc. The population may be finite or infinite. फाइनाइट और इनफाइनाइट पॉपुलेशन होने का पर्पस या इनकी डेफिनेशन का ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि पॉपुलेशन में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या पॉपुलेशन का साइज़ क्या है. If we talk about the finite population, it consists of a fixed number of elements so that it is possible to enumerate in its totality. अब अगर आप इसकी एग्जाम्पल लें तो आप कह सकते हैं कि एक शहर या किसी एक मुल्क या कॉन्टिनेंट में जितने सिटीजन्स या ह्यूमन बीइंग रहते हैं उन तमाम की पॉपुलेशंस जो है एक ऐसा नंबर है जिसको हम काउंट कर सकते हैं. इसी तरह से किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम या एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स. अगर हम बात करें इन्फिनाइट पॉपुलेशन के बारे में, इन्फिनाइट पॉपुलेशन एक ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पर इट इज़ नॉट थ्योरेटिकली पॉसिबल टू ऑब्जर्व द टोटल एलिमेंट्स. इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे स्टार्स हैं हमारे पास, क्योंकि आपको स्टार्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं मालूम. It is also to be noted that regarding the practical implications of infinite population, we consider a population as infinite when during a specific period of time it is not possible to enumerate the population. इसी तरह से हमारे पास जो पॉपुलेशन है इसकी नॉर्मली हम उसको दो तरह की टाइप्स जो हैं उसमें स्टडी करते हैं. द फर्स्ट इज़ टारगेट पॉपुलेशन एंड द सेकंड इज सैम्पल्ड पॉपुलेशन. रिगार्डिंग द टारगेट पॉपुलेशन, ए टारगेट पॉपुलेशन इज द एंटायर ग्रुप अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज डिसाइड एंड कंक्लूजन इज मेड. इफ वी टॉक अबाउट a survey, in a survey, the target population is the population which we wish to study. कि अगर हम किसी ख़ास इलाके का सर्वे करना चाहते हैं तो वहाँ पर मौजूद तमाम यूनिट्स या तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे लिए टारगेट पॉपुलेशन कहलाएगी. और अगर हम बात करें सैम्पल्ड पॉपुलेशन के बारे में तो then the sample population is the population which you are able to observe in a sample. आइडियली ये कहा जाता है कि आपकी जो टारगेट पॉपुलेशन है और आपकी जो सैम्पल पॉपुलेशन है वो एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता कि आप जो आइडियलाइज करते हैं कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह पर और ड्यू टू सम observable circumstances you are unable to
have that population. So in that cases, you are restricted to sampled population. इसी तरह से अगर हम सैम्पल्स की बात करें, सैम्पल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन and this sample should be representative of its population. In case the sample is a representative of its population, then it is very informative and maximum information can be obtained about the population with minimum efforts. Sampling is the process of selecting the sample for estimating the population characteristics. In other words, it is the process of obtaining information about an entire population by examining only a part of it. Parameters. Parameters is a numerical descriptive measure of a population, or when the characteristics of whole population are described, they are known as parameters. Because it is based on observation in the population, its value is often unknown. जब हम पैरामीटर्स की बात करेंगे तो नॉर्मली हम बात कर रहे होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, और किसी भी पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स का मतलब उनके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करना है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में या पैरामीटर्स में नॉर्मली हम मीन की बात करते हैं, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन, और इस तरह की बाकी जो डिस्क्रिप्टिव मेजर्स हैं उनके बारे में. इसी तरह से सैम्पल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इट इज़ ए न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर ऑफ ए सैम्पल. इसका मतलब है कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं सैम्पल्स के लिए, देन द वर्ड वी विल यूज इज सैम्पल स्टैटिस्टिक. जैसे अगर हम बात करें कि आपने समझना किस तरह से है कि कोई भी अगर आप मीन, मीडियन या मोड की बात हो रही है तो वो या किसी पॉपुलेशन के बारे में है या सैंपल के बारे में है. बोलकर हम बता सकते हैं कि जब हम ऑरली बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि ये मीन जो है पॉपुलेशन का मीन है, या आपको लिखते हुए इस बात को डिस्क्राइब करना होगा या एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी कि आप किस पॉपुलेशन या सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए कि कौन से लेटर्स जो हैं या कौन सी नोटेशंस जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए पॉपुलेशंस के लिए और सैंपल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. Normally, statisticians use low Roman case for sample statistics, and they use Greek or capital letter to denote population parameters. टेबल में आप देख सकते हैं कि population parameters जिसमें मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और बाइनोमियल प्रोपोर्शन शामिल हैं, उसको जाहिर करने के लिए आप म्यू, ईटा, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा और रो यूज़ करते हैं. जबकि अगर आप इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं
یا آپ ان کو یوز کرتے ہیں تو لکھنے میں آپ ان کو مینس کو ایکس بار لکھیں گے، میڈین کو کیپٹل ایم کے ساتھ، اسمال ایس کے ویریئنس کے لیے یوز کیا جائے گا، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے لیے ایس، اور بائنومیل پروپورشن کے لیے آپ پی ہیٹ یوز کرتے ہیں۔ Sample design. Sample design refer to the plans and method to be followed in selecting sample from the target population and the estimation technique formula for computing the sample statistics. سیمپل ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ کون سے میتھڈز ہیں، وہ کیا پلان ہے جو آپ یوز کرتے ہیں جب آپ نے پاپولیشن سے سیمپل کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ تو نارملی سیمپل ڈیزائن آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ نے کیسے سیمپل کو سلیکٹ کرنا ہے، یا وہ کون سا میتھڈ ہوگا جو آپ سیمپل سلیکشنز کے لیے یوز کریں گے، اور انہی میتھڈ کی بنا پر آپ بعد میں سیمپل کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان سے انفر کریں گے پاپولیشن کے پیرامیٹرز کو۔ اور بنیادی مقصد بھی سیمپلنگ کا نارملی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کی بیسس کے اوپر پاپولیشن کے جو پیرامیٹرز جو ہیں ان کی وضاحت کر سکیں۔ اسی sampling unit and sampling frame. If a population is subdivided in some way into parts, then these parts are called sampling units. سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک پاپولیشن ہے اور آپ اپنی کنوینئنس کے لیے یا سیمپلنگ کو بہتر بنانے کے لیے اس کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو ہر ایک حصہ جو ہوگا وہ ایک سیمپلنگ یونٹ کہلائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ان تمام جو سیمپلنگ یونٹس ہیں ان کو ایز اے ہول سیمپلنگ فریم کہہ سکتے ہیں۔ اور سیمپلنگ فریم میں سے کا ہر پارٹ یا سیمپلنگ فریم میں سے اگر آپ کوئی بھی یونٹ لیتے ہیں تو آپ اس یونٹ کو سیمپلنگ یونٹ کہتے ہیں۔ Now we will talk about types of sampling. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سیمپلنگ جو ہیں اس کی کتنی طرح کی اقسام ہیں۔ نارملی 2 طرح کی سیمپلنگ کی ٹائپس ہیں، ان میں سے پہلی جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں نان رینڈم اور سم ٹائمز نان پروبیبلٹی بیسڈ سیمپلنگ۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر ڈیفائن کرنا ہو تو all the items in the population does not have the same chance of being chosen in the sample. کہ نان رینڈم سیمپلنگ میں جتنے بھی سیمپلز آپ کلیکٹ کرتے ہیں تو جو چوزن سیمپلز ہیں جن کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ان کی پروبیبلٹی جو ہے زیادہ ہوگی ان یونٹ سے یا اس پاپولیشن کے پارٹ سے جن کو آپ نے چوز نہیں کیا۔ سیکنڈ ٹائپ از رینڈم اور probability sampling. In this type of sampling, all the items in the population have an equal chance of being chosen in the sample. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ چوز کرتے ہیں تو پاپولیشن کے تمام ایلیمنٹس جو ہیں ہر ایک کے پاس یکساں پروبیبلٹی ہوگی ٹو بی سلیکٹڈ فار اے سیمپل۔